We request our Chief Guest, sir, and other esteemed dignitaries to kindly light the ceremonial lamp as we mark the auspicious beginning to this landmark event. We extend a very warm welcome to Shri Rakesh Singh, Honorable Minister for Public Works Department, Government of MP. A round of applause as we light the ceremonial lamp, ladies and gentlemen, in the hands of our Honorable Chief Guest, our Honorable dignitaries, lighting the ceremonial lamp. Kindly keep the applause going as we light the ceremonial lamp, ladies and gentlemen. Thank you, esteemed dignitaries. The light we've kindled today represents the spirit of Gati Shakti, guiding the nation's journey towards synergy, speed, and sustainable growth. We now have our esteemed dignitaries gracing the stage once again with their benign presence. And now, ladies and gentlemen, to commence the formal proceedings, may I now invite Shri Pankaj Kumar, Joint Secretary, DPIIT, to deliver the welcome address and set the context for today's events. Esteemed audience in the hall, on behalf of the Logistic Division, DPIIT, Ministry of Commerce and Industry, I extend a warm welcome to this very special day for our division, for our ministry, and for all of us. Especially, I extend my heartily welcome to the dignitaries on dais, our inspiring and dynamic leader, Honorable Sri Piyush Goyal ji, Minister for Commerce and Industry, Government of India. I also welcome Sri Rakesh Singh, Minister for Public Works Department, Government of Madhya Pradesh, Sri Shankar Lalwani ji, Honorable Member of Parliament, Sri Manoj Chaudhary ji, Vice Chancellor, Gati Shakti Vishwavidyalaya, and my colleague from BISEC and Sri Vinay Thakur, Special DG BISEC. I also welcome the central government ministries who are not only our partner, the PM Gati Shakti belong to them as well, as much as it is of DPIIT. And also the delegates from state government, union territories, districts, where we are extending today to all the aspirational districts, and all the delegates from the industry, private sector, our partners, knowledge partners, and all. I also extend my welcome to all those delegates, participants, and officers who have joined through video conferencing. A lot of them are there, particularly from states and union territories. They are the equal partner of this PM Gati Shakti vision of our Honorable Prime Minister, Sri Modi ji. This day we all know, but I am just reiterating on this dais that 4 years before, Honorable Prime Minister gave us the vision of PM Gati Shakti on this very day. That was an effort to integrate the infrastructural and logistics planning in India through geospatial digital platform. That was a very new thing at that moment. In this 4 years of the journey of PM Gati Shakti, which we'll be showing you shortly, we have achieved many milestones. This has changed the way planning is done on ground.
and you all have been the worthy partner of this journey. Today, we are not only lucky, but we are elated and inspired because our honorable leader, who was there, Sri Piyush Goyal ji, when this was launched, today we are so lucky that he himself, from his auspicious hand, he will be inaugurating many of the initiatives which our team could achieve. So, as part of today's function, the first and foremost, we are opening the PM Gati Shakti to private sector, to general public. That was the vision of Honorable Prime Minister. In many of his speeches, he said that PM Gati Shakti is for all kind of planning, be it government or private. And under the dynamic leadership of our Honorable Minister for Commerce and Industry, for last many months, Team BISEC and Team Logistics worked to see this day when we'll be opening this to public. Along with that, we are taking this opportunity and the august presence of our leader, Sri Piyush Goyal ji, to launch many of the initiatives in your presence in this August gathering. We are launching third volume of the PM Gati Shakti Compendium, including 15 landmark use cases, in which 5 to 6 are from social sector. We are launching PM Gati Shakti dashboard, knowledge management system, data management system, and PM Gati Shakti offshore. That is another addendum to the PM Gati Shakti platform to plan the infrastructure and logistics to the offshore, 15,000 kilometer offshore of India. We are also extending our endeavor of PM Gati Shakti to district for district master plan from 28 aspirational districts to all 112 aspirational districts today. And we are also launching today LEAPS, that is recognition and award for good work done in logistic ecosystem by the industry, startup, MSME and all. So from today, that application invitation will be open on the award portal of Government of India. As I told, this is not only commemorating 4 years of PM Gati Shakti, but taking another place to take this further ahead, to take PM Gati Shakti to its new height. On behalf of Team Logistic, I commit in this hall, in the presence of you all, that we will work untirelessly, continuously, to see that the vision of Honorable Prime Minister and vision of our Honorable Minister is culminated into new kind of initiatives, new applications, and new frontiers of PM Gati Shakti to have an integrated infrastructure and logistic plan for Viksit Bharat. Jai Hind. Thank you very much, sir, for your warm welcome and setting the context for the day ahead. May I now invite Sri Vinay Thakur, Special Director General BISEC N, to address the gathering. Can you please welcome him on the dais? Very good morning, Honorable Minister of Commerce and Industry, Sri Piyush Goyal sir, Honorable PWD Minister from Government of Madhya Pradesh, Rakesh Singh sir, Honorable Member of Parliament from Indore, Shankar Lalwani sahab, Manoj Chaudhary sahab, Vice Chancellor, Gati Shakti Vishwavidyalaya, Pankaj ji, Joint Secretary in DPIIT, other senior officers from ministries and states, distinguished guests, delegates and colleagues. First of all, I would like to place on record the support being given by Honorable Minister and regular interaction and guidance which he keep giving to us on the implementation of PM Gati Shakti, since this is a big program of the government. So regular guidance, regular monitoring, regular taking demonstration around that, sir has been taking on PM Gati Shakti. And then second, the active uses by the states and especially Government of Madhya Pradesh, where Honorable Minister is here today,
and he have visited probably half a dozen times our office in Gandhinagar to see to it that PM Gati Shakti is fully implemented for the PWD automation in the state of Madhya Pradesh, starting from the road network mapping, asset mapping, and then seeing to it how technology can be used to have the best of the roads, best of the works done in Public Works Department in the government of Madhya Pradesh. I would also like to thank all the ministries who are here and in now PM Gati Shakti system, states for implementing this system in a wonderful manner, which was launched and even conceptualized by Honorable Prime Minister 4 years back. This has become a very, very crucial tool now for planning and execution of the infrastructural projects throughout the country. The platform has ensured that we have an integrated coordination among ministry, which somehow earlier was missing, but then technology has seen to it that we are working together, we are seeing to it that we do the project execution in a coordinated manner. This has also not only the infrastructure ministry, but this has also helped the social sector ministries in identifying the developmental goals. And as Sir was talking just now, JS was talking just now, that this is being taken to all the aspirational districts. So it has helped the social sector ministries, area development ministries in identifying the developmental goals so that they can be planned in such a manner that different ministries can work together, converge their activities, convert their schemes, and then develop those particular area in a much, much better manner. And PM Janman is one example where all the PVTs, particularly vulnerable tribal habitations, around 32,000 of them were developed in an integrated manner by Ministry of Tribal Affairs and other ministries together. States are using this infrastructure in a bigger manner in order to see that they can strategize their capital investment in much, much better manner. So I would like to thank them. This framework is being supported by more than 1,600 data sets and data layers, including the common data sets which are being used by all the ministries like administrative boundaries, land records, 3D systems, census data, contour mapping, and then thematic data which is coming from different layers. So together, it is making a system so comprehensive that everyone can design and plan their activities in much, much better manner. We are also using artificial intelligence, machine learning in a big manner in this system. The entire planning using PM Gati Shakti is being supported by an AI tool. For Ministry of MNRE, where they were working on finding the roof estimation for solar installation, our model using PM Gati Shakti could help them out, and for 120 cities of the country, big cities of the country, we could do that estimation almost within one and a half months. Cyber security happens to be very, very important because this system is housing or integrating multiple data sets and coming from different states, different ministries, union territory, and also Ministry of Department of DPIIT has made a separate guidelines, security guidelines, to see that we have a best of the access controls. We have a third-party audit, code reviews happens as part of this, so that the system and the data and the privacy requirements are taken care in much, much better. We got through the guidance and support of Honorable Minister. He has been guiding us, as I was saying, and as per the budget announcement last year, the PM Gati Shakti Public is being launched, where consultants, startup, and everyone can work and use this system and data in order to have the best planning done out of this system. Lastly, I just want to convey that BIZAG is committed to support, to provide 360-degree support to everybody, to the states, in developing further tools, technologies, putting better and better technology into this. And we are also thinking of deputing 2 to 3 people in each state to see that the local support for PM Gati Shakti is being implemented at the state level itself. Together, we'll ensure that we'll have an inclusive development and then stride on the path of innovation and resilience
to achieve the agenda of Viksit Bharat by 2047. Jai Hind. Thank you. Thank you very much, sir, for sharing your valuable insights with us. Ladies and gentlemen, we'll now showcase a short video highlighting the achievement and impact of 4 years of PM Gati Shakti National Master Plan, followed by the launch of key initiatives. Kindly direct your attention towards the screen. Launched in October 2021 by the Honorable Prime Minister, PM Gati Shakti is the foundation of India's infrastructure transformation. As the nation celebrates 4 years of PM Gati Shakti, it has evolved from a planning tool into a nationwide movement for advanced infrastructure, enabling evidence-based decisions, integrated planning, and sustainable development. The mission has expanded from infrastructure to social ministries, bringing multiple economic departments together, breaking silos, enhancing connectivity, and fostering convergence. भारत ने गति शक्ति प्लेटफॉर्म बनाया है। सारी चीजें मिनटों में हाथ लग जाती हैं और प्रोजेक्ट तेज गति से आगे बढ़ते हैं और देश की प्रगति के लिए गति शक्ति एक बहुत बड़ा सामर्थ्यवान मार्ग बन चुका है। PM Gati Shakti drives the collective journey toward Viksit Bharat 2047 through a 3-tier bottom-up approach based on state and district master plans. At its core lies a digital backbone, the National Master Plan Platform, an integrated geospatial platform developed indigenously by BSAG-N. Every project is geotagged, layered with real-time data, and visible across departments. Through this collaborative platform, ministries and states plan together, identify overlaps, resolve conflicts, and fast-track approvals. From planning to monitoring, design to execution, every step is digitally aligned. PM Gati Shakti embodies the vision of Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi, focusing on area development and people-centric growth, driving both ease of living and ease of doing business. Across the nation, PM Gati Shakti is enabling strategic infrastructure that connects regions, strengthens logistics, and fuels growth. Beyond infrastructure, PM Gati Shakti is transforming lives through data-driven social and welfare initiatives, building resilient mapped zone, dashboard layer, and aligned project reflects precision, purpose, and progress. More than 300 projects of Rs 14 lakh crore valuation have been planned and aligned with PM Gati Shakti and evaluated through NPG mechanism. Integrated platform, one nation, one mission. PM Gati Shakti powering India's journey toward Viksit Bharat. And now, ladies and gentlemen, we begin with the highlight of the event, the launch of the key initiatives. We first begin with the launch of PM Gati Shakti for public through the unified geospatial interface. Till date, PM Gati Shakti platform was available for central ministries and states as a major milestone. From today onwards, it will be available for private sector. Requesting Chief Guest Sir to kindly launch the initiative by pressing the remote button. A round of applause, ladies and gentlemen, as we launch. Announced in the Union Budget 2025, PM Gati Shakti Public is an extension of the National Master Plan, opening up its powerful geospatial platform for public use. हमारे प्राइवेट प्लेयर्स उन्हें भी ये ठीक पता नहीं होता कि भविष्य में यहाँ से सड़क गुजरने वाली है या यहाँ कोई पावर स्टेशन लगने वाला है। इस वजह से वो भी किसी क्षेत्र को लेकर, किसी सेक्टर को लेकर बेहतर प्लान नहीं कर पाते। इन सारी दिक्कतों का हल पीएम गति शक्ति नेशनल प्लान। Until now, project planning required multiple surveys, repeated data collection, and lengthy clearance processes, leading to delays, duplication of effort, and higher costs. With PM Gati Shakti Public, this will change. Developed by DPIIT
and Bicycle. In collaboration with ministries, states and UTs, the platform provides open access to Gati Shakti modules through user-friendly query modules for identifying suitable sites, planning alignments for linear projects like road, pipelines, railways and utilities, mapping required approvals such as forests, coastal regulation zone, eco-sensitive areas, etc. Checking intersections with existing social, economic and infrastructure to prevent conflicts. By integrating all this intelligence into one platform, PM Gati Shakti Public helps reduce time by identifying regulations at the planning stage, enable evidence-based integrated planning, support private sector entities and professionals in participative planning activities. Together, let us power India's growth story through data-driven and participative planning and step towards a Viksit Bharat. Next, we unveil the PM Gati Shakti Compendium Volume 3, which highlights the progress, best practices, and success stories from various ministries and states implementing the National Master Plan. This volume stands as a testament to 4 years of collaborative planning and transformative outcomes through the PM Gati Shakti initiative. And with this, ladies and gentlemen, we launch the PM Gati Shakti Compendium. A round of applause and hearty congratulations. Thank you, dignitaries, for doing the honors. Next, we launch the PM Gati Shakti NMP Dashboard, a comprehensive multi-sector reporting system developed by BISEC-N. This centralized platform enables ministries, departments, and states to monitor projects, track users, and manage issues in real time. May we request our Honorable Chief Guest, sir, to kindly launch the PM Gati Shakti NMP Dashboard. And now, ladies and gentlemen, we launch the PM Gati Shakti Knowledge Management System, a dedicated module for sharing best practices among ministries and states, enabling cross-learning, collaboration, and wider adoption of innovative approaches. We once again request Honorable Chief Guest, sir, to kindly launch. And now, marching ahead, we launch the PM Gati Shakti Decentralized Data Sharing Module, a platform that empowers ministries, departments, and states to upload, validate, and manage their projects. And with this, we launch the PM Gati Shakti Decentralized Data Sharing Module. Can we have a more energetic round of applause? It's a moment of great pride for all of us, ladies and gentlemen. Up next, we request our Chief Guest, sir, to kindly unveil the PM Gati Shakti Offshore by pressing the remote button. लगभग 11,000 किलोमीटर में फैला भारत का विशाल समुद्र तट, जो समृद्ध है समुद्री जीवों, मिनरल्स, हाइड्रोकार्बन्स और नेचुरल गैस जैसे अनमोल संसाधनों से। यही तट है भारत की रिन्यूएबल एनर्जी का भी एक बड़ा स्रोत। इस तटीय अपार संपदा के बेहतर प्रबंधन और इंटीग्रेटेड प्लानिंग के लिए पीएम गति शक्ति के अंतर्गत विकसित किया गया है एक यूनिफाइड डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफशोर पीएम गति शक्ति, जो ऑफशोर प्रोजेक्ट्स प्लानिंग और मैनेजमेंट को बनाता है स्मार्ट, कुशल और डेटा आधारित। ये पोर्टल केवल मैप व्यूअर न होकर एक पावरफुल डिसीजन सपोर्ट सिस्टम है, जिसमें सैकड़ों जीआईएस डाटा लेयर्स और एआईएमएल बेस्ड एनालिटिकल टूल की उपलब्धता होने से साइट सूटेबिलिटी, लॉजिस्टिक्स प्लान, ऑफशोर विंड फार्म्स, रिसोर्स एक्सप्लोरेशन, कोस्टल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और रेगुलेटरी कंप्लायंस को बनाता है तेज, सरल और सटीक।
ये जियो स्पाशियल इंटरफेस प्रदान करता है, विभिन्न मंत्रालयों के महत्वपूर्ण डेटा के साथ ऑफशोर प्रोजेक्ट्स प्लानिंग को एक होलिस्टिक अप्रोच। ये प्लेटफॉर्म डेटा, टेक्नोलॉजी और कोलैबोरेशन के संगम द्वारा सभी स्टेक होल्डर्स को जोड़ता और लाभ पहुंचाता है। ऑफशोर पीएम गति शक्ति पोर्टल भारत की अपार ऑफशोर क्षमता को दक्षता के साथ उपयोग करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जो सस्टेनेबल ब्लू इकोनॉमी और क्लीन एनर्जी भविष्य की मजबूत नींव रख रहा है। The second last initiative to be launched today is the PM Gati Shakti District Master Plan for all 112 aspirational districts. And finally, ladies and gentlemen, we launch LEAPS 2025 Logistics Excellence Advancement and Performance Shield, a flagship DPIIT initiative. LEAPS Logistics Excellence, Advancement and Performance Shield is a flagship initiative of DPIIT, builds upon the transformative vision of PM Gati Shakti and NLP, aiming to promote efficiency, competitiveness and sustainability in India's logistics sector. LEAPS not only recognizing players in the core logistics sector but also the MSMEs, startups and academia who have been providing innovative solutions across the logistics ecosystem. Through a three-stage evaluation process, preliminary screening, evaluation by expert committee and the national jury round recognized the most deserving participants for their outstanding achievements and innovations in the logistics sector. Registrations for LEAPS 2025 are now open. Applications are invited across the 13 categories: core logistics, MSME, startups, institutions, special category. By recognizing and rewarding innovation, LEAPS 2025 will help to create a future-ready logistics ecosystem that strengthens Make in India, empowers Atmanirbhar Bharat, and contributes to the realization of Viksit Bharat by 2047. LEAPS 2025, recognizing India's logistics excellence. Ladies and gentlemen, please join me in welcoming Shri Jitin Prasad, Honorable Minister of State for Commerce and Industry, Government of India. We extend a very warm and hearty welcome to Honorable Minister of State. And ladies and gentlemen, with this we conclude the launch of key initiatives. We thank our esteemed chief guests and our distinguished dignitaries on the stage for inaugurating these initiatives. And may I now respectfully invite Shri Rakesh Singh, Honorable Minister for Public Works Department, Government of Madhya Pradesh, to share his address. Can we please extend a warm welcome to him on the dais? आज के इस बहुत ही गर्मामय कार्यक्रम में मंच पे विराजमान देश के अत्यंत कर्मठ वाणिज्य मंत्री सम्माननीय पीयूष गोयल जी, मंचासीन केंद्र में मंत्री सम्माननीय जितिन प्रसाद जी, मंचासीन इंदौर से सांसद माननीय शंकर जी, मंच पे विराजमान श्री पंकज जी, श्री विनय जी, श्री मनोज जी और उपस्थित सभी सम्मानीय और आत्मीयजन। प्रधानमंत्री गति शक्ति को प्रारंभ हुए 4 वर्ष बीत रहे, आज हम चौथी वर्षगांठ पर हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 13 अक्टूबर 2021 को यह परियोजना प्रारंभ की थी। दुर्गा अष्टमी का दिन था वो, यानी शक्ति की उपासना के दिन गति शक्ति योजना का प्रारंभ। और शायद ही किसी ने सोचा होगा कि प्रधानमंत्री
गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान भारत के आत्मबल को आत्मनिर्भरता के संकल्प के साथ एक इतिहास रचने वाला है। हमें कहते हुए बहुत खुशी है कि नेक्स्ट जनरेशन इंफ्रास्ट्रक्चर और मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी के साथ भारत 21वीं सदी में जा रहा है। मैं ऐसा मानता हूं कि भारत के अर्थतंत्र को प्रधानमंत्री गति शक्ति से शक्ति मिलने जा रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने यह भी कहा था कि देश के लॉजिस्टिक कास्ट का 13% हमारी कुल जीडीपी का आता है, जो बहुत ज्यादा है। निश्चित रूप से गति शक्ति से इसमें सुधार आ रहा है, लेकिन ये सुधार एक बड़े व्यापक और सकारात्मक परिवर्तन का रूप तभी लेगा जब इसमें राज्यों का भी सहयोग होगा। और इसलिए हम मध्य प्रदेश में पीएम गति शक्ति कार्यान्वित करने के लिए बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। और इसके लिए हमने तय किया था कि हम बाइसेक के साथ काम करें। मैं स्वयं भास्कराचार्य इंस्टीट्यूट अपने विभाग की पूरी टीम के साथ 2 बार गया। जिस दिन मैंने पहली बार विभाग का कार्यभार संभाला था, मैं तो 20 वर्ष तक पीयूष जी के साथ दिल्ली में पार्लियामेंट में ही था, लेकिन जाने के बाद लगा कि वर्क कल्चर का फर्क क्या होता है वो सामने है। और एक टेबल से दूसरी टेबल के बीच में ही चीजें बदल जाती हैं। विभागों की तो बात ही अलग है। और उसलिए पहले दिन ही हमने विभाग की टैग लाइन तय की थी कि लोक निर्माण से लोक कल्याण। बाद में मुझे समझ में आया कि लोक निर्माण से लोक कल्याण की ये यात्रा प्रधानमंत्री गति शक्ति के बिना पूरी नहीं हो सकती। और इसलिए जिस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं वो माननीय प्रधानमंत्री जी का विजन 2047 के संकल्प को साकार करने वाला है। हमारी कोशिश है कि मध्य प्रदेश में पीडब्ल्यूडी डिजिटल पीडब्ल्यूडी के रूप में जाना जाए। और उसके लिए हमने बहुत सारे अलग अलग प्रयास किए हैं। मैं कम समय में ही अपनी बात पूरी करूंगा। हमने लोक निर्माण सर्वेक्षण ऐप तैयार किया है, जिसके माध्यम से पूरे प्रदेश में हमारी सभी सड़कें, ब्रिजेस और बिल्डिंग्स, इन सभी की जीआईएस मैपिंग हो रही है। 95% से ज़्यादा सड़कों की मैपिंग पूरी हो चुकी है। इसके साथ साथ हमने पीएम गति शक्ति पोर्टल का अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप भास्कराचार्य संस्थान के सहयोग से एक विशेष संस्करण भी तैयार करवाया है। इसके माध्यम से मैपिंग के अलावा जो नए अलाइनमेंट हैं वो, और साथ में डीपीआर भी हम इसके माध्यम से बनाएं, ये कोशिश कर रहे हैं, ताकि हम एरियल डिस्टेंस के आधार पर कम दूरी की सड़कों को आइडेंटिफाई कर सकें। तेजी के साथ हमने बहुत सारी सड़कों को आइडेंटिफाई भी किया है। रोड नेटवर्क मास्टर प्लान, हमारी कोशिश है कि भास्कराचार्य संस्थान के सहयोग से जो हमने मॉड्यूल तैयार किया है, उसमें हमारे इंजीनियर्स किसी भी स्थान की जनसंख्या, वहाँ की लैंड की अवेलेबिलिटी और उसके साथ साथ दूरी, इसके एनालिसिस के आधार पर, और साथ साथ अलग अलग कैटेगरी, कहीं हमारे पर्यटन की दृष्टि से उपयोगी क्षेत्र है, कहीं उद्योग की दृष्टि से उपयोगी क्षेत्र है, तो सरकार की कार्य योजना के आधार पर उसका मास्टर प्लान भी हम इससे तय कर सकें। हमने ग्रीनफील्ड अलाइनमेंट भी प्रधानमंत्री गति शक्ति के अंतर्गत भास्कराचार्य के सहयोग से चिन्हित किए हैं। साथ हमने नए ग्रीनफील्ड अलाइनमेंट चिन्हित कर लिए हैं और उसके साथ साथ 20 रिंग रोड भी हमने चिन्हित किए हैं, जिनका इस पोर्टल पर डीपीआर बनाने की तैयारी चल रही है। हमने पॉट होल्स की जानकारी और उसकी रिपेयरिंग के लिए एक ऐप लॉन्च किया था, जिसका नाम रखा था लोकपथ।
मुझे ये कहते हुए खुशी है कि 97% उसका सक्सेस रेट है और माननीय पीयूष जी बनने के 5 महीने के अंदर ही अमिताभ बच्चन जी ने अपने कार्यक्रम में कौन बनेगा करोड़पति में लोकपत ऐप को लेकर सवाल पूछा था, जो ये दिखाता था कि इसकी लोकप्रियता कितनी तेजी के साथ बढ़ी है। और अब हम भास्कराचार्य इंस्टीट्यूट के साथ इसको व्यापक रूप देने जा रहे हैं। यानी मध्य प्रदेश की सीमा में अगर कोई प्रवेश करेगा, इस ऐप को वो अपना डाउनलोड कर ले, तो रोड्स की पूरी मैपिंग, अगर उसको मध्य प्रदेश के एक छोर से दूसरे छोर पर जाना है तो उसके पास रोड्स के सारे ऑप्शंस आ जाएं, कहाँ कितना ट्रैफिक है वो जानकारी उस पर आ जाए, वे साइड एमिनिटीज की जानकारी आ जाए, पेट्रोल पंप्स की जानकारी आ जाए और इमरजेंसी कॉल सेंटर से भी वो कनेक्ट हो जाए और उसके साथ आने वाले ब्लैक स्पॉट भी उसको दिखाई दें। हम ये भी इसके माध्यम से करने जा रहे हैं। लोक परियोजना प्रबंधन प्रणाली और रोड एसेट मैनेजमेंट सिस्टम को भी हमने पीएम गति शक्ति पोर्टल से जोड़ रहे हैं, जिसमें सड़कों की रफनेस से लेके किसी भी परियोजना की प्लानिंग से लेकर और उसके अंतिम चरण तक वो लगभग सब कुछ और उसकी भविष्य की योजनाएं, वो सब कुछ भी एक ही डैशबोर्ड पर दिखाई दे, ये भी हम जल्दी ही करने जा रहे हैं। अभी जब विश्व पर्यावरण दिवस था 1 जुलाई को, मध्य प्रदेश के लोक निर्माण विभाग ने हमारी जो सड़कें हैं और जो भवन हैं उनके आसपास 2.5 लाख पौधारोपण किया था। लेकिन केवल पौधारोपण नहीं, बल्कि हम भास्कराचार्य के साथ मिलकर हम उनकी सैटेलाइट मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं, ताकि हर 6 महीने में हम ये देख सकें कि वो पौधे कब अब किस स्थिति में है। प्रधानमंत्री गति शक्ति के अंतर्गत जितने भी उस टूल से हम निर्माण कार्य कर रहे हैं, उसके लिए हमने रैंडम इंस्पेक्शन टू गति शक्ति, ये शायद देश में पहली बार है कि हमने एक सॉफ्टवेयर बनाया और उसमें हमारे सारे चीफ इंजीनियर्स महीने में 2 दिन 5 तारीख और 20 तारीख को सड़कों पर होते हैं। 3 तारीख को वो सॉफ्टवेयर ये बताता है कि किस चीफ इंजीनियर को किस क्षेत्र में जाना है, उसके पहले उसे पता नहीं होता। जब वो मूव कर जाता है तो 4 तारीख को दूसरा सॉफ्टवेयर उसको ये बताता है कि उसको उस जिले में कौन से 5 कामों की निगरानी करना है या इंस्पेक्शन करना है। और जब वो इंस्पेक्शन के लिए जाता है तब उसको सुबह फिर से ये मालूम पड़ता है कि अगर 5 किलोमीटर की रोड है तो उस 5 किलोमीटर की रोड पर उसको कहाँ का सैंपल लेना है, और वो जो सैंपल लेता है वो भी उसको ये नहीं पता होता कि ये सैंपल जांच के लिए कहाँ पर जाएगा। तो उसके कारण से हमें लगता है कि बहुत तेजी के साथ क्वालिटी में सुधार आया है। इसी गति शक्ति पोर्टल का उपयोग करके हमने जो दोहराव वाले प्रस्ताव बजट में आते थे, यानी एक ही सड़क का डुप्लीकेशन हो जाता था, उनको भी इससे रोका है, वो सम्मिलित नहीं हो पाते हैं। एक और चीज जो हम कर रहे हैं, जो शायद वो भी देश में शायद पहली ही बार है, किसी भी परियोजना की टाइमलाइन। अभी तक ये होता है कि किसी परियोजना के बारे में इंजीनियर ही ये तय करता है कि उसको पूरा होने में कितना समय लगेगा। कई बार वो उसकी लागत के आधार पर होता है या कई बार अलग अलग मापदंडों के आधार पर, लेकिन इसको हम पहली बार साइंटिफिक आधार पर इसका निर्धारण करने जा रहे हैं। यानी हमारा वो टूल जो प्रधानमंत्री गति शक्ति और भास्कराचार्य के सहयोग से हम बनाने जा रहे हैं, वो टूल ये बता देगा उस प्रोजेक्ट के लिए कि इसमें वास्तव में कितना समय लगना चाहिए, और उतने समय का निर्धारण साइंटिफिक आधार पर ही होगा, ताकि उसके लगने वाले समय को लेकर किसी तरह की कोई शंका ना रहे, उसमें किसी तरह का कोई विवाद ना रहे। और इन सबके लिए जिस तरह के स्किल की ज़रूरत होती है, उसके लिए हमने एक साथ हमारे विभाग के लगभग 1700 इंजीनियर्स को प्रधानमंत्री गति शक्ति प्लेटफॉर्म पर अलाइनमेंट, निर्धारण, डिजाइनिंग और डीपीआर वैलिडेशन का प्रशिक्षण भी
हमने उसके लिए किया है। मेरा मानना है कि अलग अलग राज्य अपने अपने स्तर पर प्रधानमंत्री गति शक्ति पोर्टल का उपयोग कर ही रहे होंगे, लेकिन आने वाले समय में भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर इंटीग्रेशन का एक वैश्विक उदाहरण ये पीएम गति शक्ति पोर्टल बनने जा रहा है, ऐसा मैं मानता हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस सोच के साथ, भविष्य की जिन संकल्पनाओं के साथ इसका प्रारंभ किया है, वो बहुत तेजी के साथ विभिन्न राज्यों में बहुत सारे सकारात्मक बदलावों के साथ अपने आगे के चरण की ओर जा रहा है। आज भी कई सारी शुरुआत माननीय मंत्री जी ने यहाँ पर की है। निश्चित रूप से सभी राज्यों के साथ समन्वय बनाकर हम तेजी के साथ इस दिशा में आगे बढ़ेंगे। मुझे खुशी है कि प्रधानमंत्री गति शक्ति पोर्टल ने कम से कम मध्य प्रदेश में, मेरा मानना है कि लोक निर्माण विभाग को एक ऐसा आधार प्रदान किया है जिसके आधार पर हम कह सकते हैं कि अगले एक साल में मध्य प्रदेश का लोक निर्माण विभाग एक रोल मॉडल के रूप में देश के सामने होगा। मैं आज के इस कार्यक्रम में इस मंच पे विचार साझा करने के लिए माननीय मंत्री द्वय के प्रति आभार प्रकट करता हूं और विशेष रूप से आभार देना चाहता हूं भास्कराचार्य इंस्टीट्यूट का, आदरणीय टीपी सिंह जी का, विनय जी का, जिनके कारण से बहुत सारे सकारात्मक परिवर्तन करने में हम सफल हो रहे हैं। और मुझे उम्मीद है कि और राज्य भी निश्चित रूप से इसका अनुसरण करते हुए आगे बढ़ेंगे और प्रधानमंत्री जी के सपने को साकार करेंगे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय मंत्री जी, आपके प्रेरणात्मक शब्दों के लिए आपका हार्दिक धन्यवाद। And it is now my privilege to invite on the dais Shri Jitin Prasad, Honorable Minister of State for Commerce and Industry, Government of India, to address the august gathering. Can we extend a very warm welcome to him on the dais? बहुत बहुत धन्यवाद। आज यहाँ हम लोग सब उपस्थित हैं गति शक्ति योजना के चौथी वर्षगांठ के उपलक्ष्य में, और आदरणीय पीयूष गोयल जी, ऑनरेबल मिनिस्टर कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, जो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के संकल्प और सोच को धरातल पर उतारने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। और ये हम लोगों का सौभाग्य है कि ये कितनी महत्वाकांक्षी योजना वाणिज्य विभाग के अधीन इसका क्रियान्वयन हो रहा है और आज 4 वर्ष पूरे हो गए हैं। साथ ही साथ जिनको अभी हम सुन रहे थे, श्री राकेश सिंह जी, लोक निर्माण मंत्री मध्य प्रदेश, जिन्होंने उल्लेख किया कि कितने महत्वपूर्ण भूमिका धरातल पे खास तौर से सड़कों के लिए ये हमारी गति शक्ति योजना और तमाम अन्य विभाग, खास तौर से जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है, वो प्रधानमंत्री जी के अनुरूप आत्मनिर्भर भारत के, क्योंकि जो अभी हम लोगों ने कई देखे कि जो हमारे विदेश के जो ऐप्स हैं वो कभी कभी गड़बड़ दिशा और रास्ते बता देते हैं। और एक बार तो एक उत्तर प्रदेश में उन्होंने एक जगह गाड़ी वहाँ ले गए जहाँ अंडर कंस्ट्रक्शन सेतु था और वो गाड़ी उससे गिर गई। मगर आपने जो अपना मध्य प्रदेश में लागू किया है सड़कों का नेटवर्क जो भारतीय उससे होगा, तो उसमें ये त्रुटियां दूर होंगी और भारत और सशक्त आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर होगा। श्री शंकर लालवानी जी, हमारे सांसद सदस्य इंदौर, श्री विनय ठाकुर, डीजी बायसैक, जो एक बहुत महत्वपूर्ण संस्था है और योजना है जो तमाम जो गति शक्ति की जो कहते हैं लेयर्स और प्लानिंग में इतनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, सैटेलाइट द्वारा ऊपर से वो बता सकता है और इनका डेटा बिल्कुल एक्यूरेट भारत के जो उद्देश्य से होता है, क्योंकि विदेशी डेटा जैसे मैंने कहा उसमें बायसेस होती हैं, वो उसमें त्रुटियां होती हैं। इसमें तो मैं खुद, मुझे सौभाग्य मिला था वहाँ जाने में इनके हेडक्वार्टर्स पे, और देखा कि अब तो हमारे किसान भी जो अपनी खसरा खतौनी और अपने पूरा ज़मीन का अगर आप उसमें डालें तो तुरंत बता देगा कि इस ज़िले में, इस तहसील में तमाम ये ज़मीन किसके नाम है।
और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए मैंने तो बाइसैक का इस्तेमाल किया। पीयूष जी जो हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी में एक फॉरेस्ट कवर है नेशनल पार्क, तो 25 साल में उसने बता दिया कि कितना फॉरेस्ट कवर 90 से लेके अब तक घटा है और कहाँ पे उसकी रेंज कम हुई है और कौन लोगों ने उस पर कर लिया। तो ये बड़ी हिस्टोरिक से पता लग जाता है कि हमारा फॉरेस्ट कवर या नदियों का जो रूट था वो कैसे बदल रहा है। तो ये तमाम ऐसी चीज़ें जो आगे प्लानिंग में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे इंफ्रास्ट्रक्चर की। श्री मनोज चौधरी जी, श्री पंकज कुमार हमारे जॉइंट सेक्रेटरी। तो आज मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, पहले तो लेट हो गया, क्षमा चाहता हूँ पीयूष जी की, वो वहाँ विभाग के आपके कार्यक्रम में मैं वहाँ व्यस्त था। मगर ये जो गति शक्ति योजना है सभी जानते हैं हम लोग कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी की सोच संकल्प का ये परिणाम है कि भारत जो विकसित देशों में हम लोग 2047 के जो हमारा टारगेट है उसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। और ये जो सोच थी कि सभी विभाग अपने अपने साइलोज में काम करेंगे, उसको हटाते हुए इतने विभाग, जब शुरू हुआ था शायद 16 विभाग थे, अब शायद 56 विभाग इसके अधीन आ गए हैं जो एक दूसरे से कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। और जो पहले जो सोच थी कि सब चलता है, विलम्ब होने दो, तमाम एक विभाग का काम हुआ दूसरे ने उजाड़ दिया, फिर तीसरे ने बना दिया, ये चलता है एटीट्यूड प्रधानमंत्री जी ने उल्लेख किया था, वो अब बर्दाश्त नहीं है। नया भारत है, नई सोच है, जनता भी बर्दाश्त नहीं करेगी कि उनका टैक्स पेयर्स का मनी किसी तरीके से उसमें विलम्ब भी हो या त्रुटियां भी हों, सड़कें खोद दी जाएं या पाइपलाइन बिछाने के लिए फिर से कुछ और किया जाए या कभी केबल बिछ रही है। इन चीज़ों से हम लोग अब आगे निकल गए हैं। ये तो पहले दिन की सोच थी, अब तो 4 वर्ष हो गए हैं और आदरणीय पीयूष जी का भी निर्देश है कि अब इसको नेक्स्ट लेवल पे ले जाने का समय आ गया है। सिर्फ इन बेसिक चीज़ों की बात नहीं है, तो बहुत कुछ हम लोगों ने इसमें 4 वर्षों में उपलब्धि हासिल भी की है और आने वाले समय में इसको और धार देनी है। थोड़े बहुत चैलेंजेस हैं कि डेटा नहीं मिल पा रहा है और इंटरऑपरेबिलिटी नहीं है, तमाम कुछ कैपेसिटी गैप्स हैं, मगर ये जिले स्तर तक पहुंच गया है और जो हमारी डिस्ट्रिक्ट लेवल प्लानिंग वो भी हो रही है। ऑफशोर के योजनाएं हैं, डीप सी की हैं, तमाम वहाँ तक की जो इसकी सोच है और रीच है वहाँ तक ये पहुँचेगा और तमाम चीज़ें जो हो रही हैं वो भारत को उन देशों की शुमार में ज़रूर जल्द से जल्द आएगा। मैं ज़्यादा नहीं बोलते हुए बधाई भी दूंगा, धन्यवाद भी दूंगा, क्योंकि जो लोग इसको प्रधानमंत्री जी का सपना है कि गति शक्ति योजना बिल्कुल घर घर गांव-गांव तक इसका प्रभाव पहुंचे, इंफ्रास्ट्रक्चर में हम लोग सीमलेस कनेक्टिविटीज़ और तमाम ऐसी बाधाएं हैं उनको दूर करें। ये बड़ी चीज़ है कि आज हमारे जो पोर्ट्स हैं वहाँ टर्न अराउंड टाइम हो बहुत मतलब आप समझ सकते हैं कि एक दिन से पहले ही वो अनलोडिंग लोडिंग तमाम चीज़ें हो जाती हैं, जहाँ हफ्तों तक एक ज़माने में हमारे पोर्ट्स पे शिप्स वगैरह इंतजार करती थी। तो ये ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जो गेम चेंजर्स होंगी और ये आने वाले समय में जो हमारे इंजीनियर्स हैं, नौजवान पीढ़ी है, उन्हीं के कंधों पे ये भार आएगा कि जो सोच थी उसको धरातल पे उतार के और परिवर्तन लाएं ताकि देश की जनता उसका लाभ उठा सके। तो इसी के लिए आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you, Honorable Minister of State, for your encouraging words and gracious presence. Ladies and gentlemen, it is indeed an honor to invite on the dais our Honorable Chief Guest, Minister of Commerce and Industry, Shri Piyush Goyal ji, to address the gathering. Can we extend an energetic and a very warm round of applause? Thank you very much, Jiten Prasad ji, for your encouragement to all the officials for taking the PM Gati Shakti to the next level. Shri Rakesh Singh, Minister PWD, Government of Madhya Pradesh. Shri Shankar Lalwani, Honorable Member of Parliament from Indore. Shri Vinay Thakur ji, Special DG, BISAC. Shri Manoj Chaudhary ji, Vice Chancellor, Gati Shakti Vishwavidyalaya. Our colleague Shri Pankaj Kumar,
Joint Secretary, DPIIT, all the very distinguished participants who have joined us to celebrate the 4th anniversary of PM Gati Shakti at this very prestigious Bharat Mandapam venue, where we also have the Anubhuti Kendra, which showcases how PM Gati Shakti has an impact on infrastructure development, on the lives of the people of India, on the growth story of India. Distinguished ladies and gentlemen, as we are all aware, this path-breaking initiative was launched 4 years ago on this very day. It was Durga Ashtami that day. And I remember Prime Minister Narendra Modi had said in the program, which was also held at Bharat Mandapam, that PM Gati Shakti, in some sense, brings the power of Ma Durga into national development. Ma Durga is the symbol of strength, is also revered as a protector of all of us, all of mankind. And PM Gati Shakti, which brings speed and strength, गति भी लाता है, शक्ति भी देता है. और PM गति शक्ति के जो अलग अलग गुण अभी तक के पूर्व के वक्ताओं ने बताया, उससे इतना तो ध्यान आता है कि ये साधारण योजना नहीं है. PM Gati Shakti has very deep meaning and has emerged out of Honorable Prime Minister Modi's vision and his own work, first in Gujarat, then in the central government, over nearly 18, 19 years, 2 decades of serious reflection of how infrastructure projects can be planned better, can be implemented better, can serve the people of India better. In his 24 years of working as the head of a government, first in Gujarat, for the last 11 and a half years now at the center as Prime Minister, Prime Minister Modi has been known to bring very innovative thinking in governance, is known to have a vision to make the country a prosperous, a developed nation. And collectively, we are all committed to make India a developed country, Viksit Bharat, by 2047. But the pathway to Viksit Bharat 2047 has a big role that PM Gati Shakti has been playing and will continue to play in the years ahead. Way back, almost 18, 19 years back, I don't know, Thakur Sahab would probably remember, TP Singh, the Director General, is not here today. Otherwise, he could have recounted his early days of working with Prime Minister Modi in Gujarat, when the Prime Minister used to often worry about government projects not getting the same amount of outcomes, not being implemented on time, not necessarily planned efficiently or effectively. Often time and cost overruns were the bane of infrastructure projects. Also, planning was often haphazard, incomplete. Prime Minister Modi believes in holistic planning and timely implementation in an efficient manner of all work of government, including infrastructure development. It's not only about infrastructure development. He believes the social development of an area, the infrastructure development of an area, the long-term economic
growth imperatives of the nation, all of them should be thought through in a very comprehensive manner. And therefore, the Honorable Prime Minister, when he launched PM Gati Shakti, had said that with the resolve of Atmanirbhar Bharat, the foundation for the next 25 years is being laid. And truly, the PM Gati Shakti has acted as a bridge between macro planning and micro implementation. It is a framework, it is a tool that is helpful for all of us in whatever activity, whatever work that we may take up. And I'm really delighted to see even our very distinguished and respected friends from the defense forces with us today. Because PM Gati Shakti transcends every sector of government and governance. In fact, Mr. Thakur was just telling me there's a dedicated center of BISAC working only to support the defense establishments. And it can have very game-changing implications for different aspects of national development. Today, PM Gati Shakti is not only about planning how a road will be aligned or planned or how a railway line will go. We are looking at far, far deeper integration of national planning with PM Gati Shakti's help. After all, today's launch of 112 aspirational districts being mapped on a single database, the PM Gati Shakti District Master Plan for 112 aspirational districts will help us look at these aspirational districts in toto, very holistically. What is it that will help these districts take development to the last man at the bottom of the pyramid? Ultimately, if we are looking at a prosperous India, it can only happen on the back of inclusive growth. समावेशी विकास जब तक नहीं होगा, देश के 140 करोड़ देशवासियों तक विकास नहीं पहुंचेगा, तो देश का विकास पूरा नहीं हो सकता. देश के विकास की कमियां पूरी नहीं हो सकती. And therefore, even as a tool for area approach planning, that is the whole complete planning of an area, so that every citizen in that area, every business, every industry in that area will get the benefits of all aspects of life, whether it's healthcare, whether it's education, whether it's efficient logistics for businesses, whether it's industrial development of the area, environmental planning, safety and security, harnessing the potential of minerals or mineral wealth, harnessing the potential of power generation through renewable sources. It could be solar, it could be wind, it could be pump storage, it could be hydro. In some sense, the PM Gati Shakti changes this piecemeal planning that we had seen in the past. The inefficient infrastructure development, which often saw years and years of delay and hundreds and thousands of crores of cost overruns, changing to an era of efficient management of projects, efficient utilization of resources of the country, allocation of resources for time-bound implementation of projects, and proper priorities being given
in the allocation of resources. So there was a time where you would find that there's an industrial area, but no rail connectivity to that industrial area. The road systems would be inadequate. There would be no connectivity to the port. And industry would suffer, industry's logistics costs would go up, its competitiveness would fall, and it would hurt industrial development. Jobs could be lost if industry did not do well. You may find there were certain areas which had concentration of infrastructure, large parts of the country deprived of even basic infrastructure. I remember I come from Mumbai. We have a port outside Mumbai, the JNPT, Jawaharlal Nehru Port Trust runs that port. Our friends from Port Ministry or Shipping are also here. And I used to be running an industry, I'm talking of the 80s and 90s, in which we were exporting products from JNPT port. We had a very good road connectivity or a highway till about 15 or 20 kilometers away from the port. But the last 15 or 20 kilometers were a nightmare, nearly impossible to navigate. So much so that if I ever had to go to the port for any reason, I would not take my regular car also. Because you take your regular car, it'll get so badly messed up that you may need ₹1,00,000 of repair in that car at the end of one trip to JNPT. And for years, the situation didn't change. It remained a pothole-filled, terrible road. रोड कहाँ थी और खड्डे कहाँ थे वो तय करना बड़ा मुश्किल था. छोटी बात है, पर कभी किसी के संज्ञान में नहीं आया. कभी किसी ने ये नहीं सोचा कि हर पोर्ट को कैसे हम रेलवे और हाईवे की कनेक्टिविटी अगर अच्छी देते हैं तो लॉजिस्टिक स्मूथ होगा, मटेरियल फ्लो फास्टर होगा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट को लाभ होगा, भारत की अर्थव्यवस्था और गति से आगे बढ़ेगी. अभी मैं रिपोर्ट में देख रहा था सोशल सेक्टर में कैसे इंपैक्ट होता है. जन औषधि केंद्र, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री जन आरोग्य अच्छा करने के लिए, सुधारने के लिए 2 प्रमुख योजनाएं देश के समक्ष रखी. एक तो आयुष्मान भारत, जिसके तहत आज लगभग 70 करोड़ से अधिक लोग मुफ्त में अपना इलाज अस्पताल में करवा सकते हैं. और दूसरी जन औषधि केंद्र, जो आज 10,000 से अधिक बन चुके हैं, जहां पे सस्ते में अच्छी दवाइयां, अच्छी गुणवत्ता वाली दवाइयां सामान्य लोगों के लिए, गरीब निम्न मध्यम वर्ग परिवारों के लिए, वास्तव में हम सब के लिए अच्छी किफायती कीमतों पर उपलब्ध हो सकती है. अब आप कल्पना करिए कि 70 करोड़ लोगों तक, और दुनिया में इतनी बड़ी संख्या को कभी कोई सरकार मुफ्त में इलाज दे नहीं पाई है, कोई इंश्योरेंस कंपनी भी नहीं कर पाई है. ये हिम्मत का काम था. लेकिन आप कल्पना करिए कि 70 करोड़ को तभी पहुंच पाएगा जब पर्याप्त मात्रा में अस्पताल रजिस्टर्ड हो, जिस पे व्यक्ति जाके अपना आयुष्मान कार्ड दिखा के इलाज करवा सके. आज 30,000 से अधिक अस्पताल आयुष्मान भारत में सेवा दे रहे हैं. लेकिन जब उसका मैपिंग पीएम गति शक्ति पे हो जाता है
तो ये ध्यान में आता है और उसके हिसाब से नए अस्पतालों का रजिस्ट्रेशन हो सकता है कि अगर कोई एरिया अंडर सर्व्ड है, अस्पताल कम है, जनसंख्या के आधार पर, आयुष्मान के लाभार्थियों के आधार पर क्या पर्याप्त अस्पताल, और अस्पताल में भी हर प्रकार की सेवा, कार्डियोलॉजी हो, कैंसर केयर हो, डायलिसिस हो, क्या अलग अलग सेवाएं उपलब्ध है। अब ये एक प्रकार से बहुत पुण्य का काम है, सोशल ऑब्जेक्टिव बड़ा मीट करता है, पर जब गति शक्ति पे इसको मैप करते हैं और उसके साथ साथ जनसंख्या भी मैप्ड है और उसके ऊपर आयुष्मान के लाभार्थी मैप्ड है, तो आप एक प्रकार से देश भर में अच्छी सुविधाएं सभी को उपलब्ध हो, इसको सुनिश्चित कर सकते हैं। इसी प्रकार से आज जन औषधि केंद्र कहाँ खुलना चाहिए, कहाँ कमी है, इसकी प्लानिंग भी पीएम गति शक्ति पे सब जन औषधि केंद्र मैप करने के बाद अब हेल्थ मिनिस्ट्री उसकी प्लानिंग अच्छी तरीके से कर पाती है। कहने का तात्पर्य यह है कि एक बहुमुखी सोच जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पहले गुजरात के कार्यकाल में गुजरात के लोगों को लाभ दिलवाया और तभी उन्होंने ये बाइजैक की कल्पना की थी, तभी उन्होंने कल्पना की थी कि स्पेस टेक्नोलॉजी कैसे भारत के विकास, उन दिनों गुजरात के और फिर केंद्र में आने के बाद भारत के विकास के लिए कैसे स्पेस टेक्नोलॉजी और ये डेटाबेसेस काम में लाए जा सकते हैं और देश के विकास को गति दी जा सकती है। नहीं तो हैपहैज़र्ड डेवलपमेंट से कोई देश विकसित नहीं बन सकता। और 2006 से ही 7 से ही माननीय प्रधानमंत्री जी ने बाइजैक को डेवलप करना शुरू किया। पहले गुजरात में अलग अलग प्रकार के डेटाबेसेस कलेक्ट हुए, गुजरात की प्लानिंग उसके माध्यम से अच्छी तरीके से की गई और हम सब जानते हैं गुजरात पहला राज्य था, 100% हर गांव तक, हर घर तक, हर खेत तक बिजली पहुंचाने का काम वहां पे किया गया। हम सब जानते हैं कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में जो गुजरात की गति रही गत 20, 22, 25 वर्षों में अद्भुत रही। हमें याद है एक जमाना था कि अगर सूरत में प्लेग आता था या कच्छ में भूकंप, तो कैसे सरकारी व्यवस्थाएं उसका सामना करती थी। और अब जब नेचुरल डिजास्टर देश में किधर भी आता है, यहां तक कि कोविड का भी सामना करने में भारत की सक्षमता, भारत की काबिलियत में कितना बड़ा परिवर्तन आया है मोदी जी के कार्यकाल में, ये सब हमने खुद अनुभव किया है, हमने सबने अपने अपने क्षेत्र में देखा है। Even logistics costs is something that used to hurt the competitiveness of industry. There was recently a report which demonstrated that logistics costs have started coming down quite drastically, particularly with last mile connectivity improving. So earlier, if you had a coal mine, you would mine the coal, load it into a truck, take it to the nearest railway siding, unload it onto a truck wagon, then take it to the nearest point to a power plant, again unload it to a truck, take it to the power plant, and keep it there or unload it there for final use. Imagine the inefficiency not only in the logistics costs, but also in the leakage in the system, the material getting lost in transit for a variety of reasons, sometimes even because of the rains or just falling by the wayside in heavily loaded trucks. Simple last mile connectivity at the
mining site, so that mining areas are having their own railway siding, and at the coal plant site, so that coal plants have the power plant site, so that power plants have a siding, bringing coal right up to the power plant, can make such a dramatic difference to the cost of electricity, because logistics cost comes down, that industry has to pay, that each one of us has to pay in our day-to-day lives. And across the country, ministries, states, town planners, PWD department, Rakesh ji just explained how in many areas they've been able to utilize PM Gati Shakti. Everybody can benefit. And I think over the last 4 years, the multifarious areas in which PM Gati Shakti has expanded, and we've experienced that today, whether it's the compendium volume 3, which comes up with various initiatives which demonstrate how PM Gati Shakti is impacting our lives, whether it's the new initiative the Honorable Prime Minister had suggested and then it was announced in the last budget, and I'm happy that BISAG and the department have prepared themselves so that the public also can start using the databases of PM Gati Shakti through the unified geospatial interface. I'm also delighted that a very comprehensive multi-sector reporting system has been launched today, which will keep a track of how PM Gati Shakti is impacting development of different areas through the area approach that we are now adopting. Also, the decentralized data sharing module will help us in making sure that data is available also. And it's equally important now for everybody to ensure that data is up to date. A layer of data may be prepared maybe 3 or 4 years back, but has to be periodically kept updated. Otherwise, planning can again go wrong. You may have data of all high-rise buildings based on which you plan the funnel of an airport. But in the last 4 years, a new high-rise building may have come up. If that is also not mapped and databases kept updated, you may land up making a whole airport and a runway with a funnel planned not to hurt anybody. And when you are ready to start operations, you don't know whether airport will not work or that high-rise has to be broken down. Both are equally bad. And therefore, updated databases for which proper dashboards are needed will also help us in our planning, in the data that we share with the public. The most interesting thing is our effort to reach the aspirational districts and make sure that the area planning of the aspirational districts is not both effective in serving their needs, but also brings them out of being backward or deprived of infrastructure. And that is a collective effort that all state governments and the center are working towards. Finally, the launch of LEAPS, the Logistics Excellence Advancement and Performance Shield, is an initiative to recognize the performance of all the stakeholders to ensure better and more efficient logistics in the entire country. I think it's a great moment of celebration for all of us. 4 years may sound to be a long time, may be considered a very short period of time. But the achievements are truly phenomenal in 4 years. And I think the time is now ripe for PM Gati Shakti to go to the next level and become a much larger initiative so that it transcends ministries, departments, states, union territories. Now with initiatives going into the ocean for resource mapping or exploration, for planning wind energy, for planning the offshore cables or underground cables,
optic cables now for telecom or data, in the future undersea cables for electricity transmission. The scope and scale and size of PM Gati Shakti is undergoing a massive transformation. And towards that end, we are working in the government to see how this outstanding initiative, the dream of Prime Minister Modi, can now go to the next level of development and growth. And we are all working to take this beyond physical infrastructure, beyond social infrastructure, to much larger levels of interface with the people, interface with industry, interface with governments and infrastructure planners, and in some sense, making this a centerpiece of national development, of human development, and a tool which will take India towards greater heights, towards becoming Viksit Bharat 2047, a prosperous and developed nation by the time we celebrate 100 years of independence. As the Honorable Prime Minister said, and I quote, "Not only did we develop a work culture of completing projects within time, efforts are now being made to complete the projects before time." And I think collectively, if all of us were to leverage the huge strengths that PM Gati Shakti brings on the table. I'm told at about 3:30 in the afternoon, all of you are going to go and witness at the Anubhati Kendra next door how this has really transformed our working in different areas. Ye Anubhuti, this experience will help you also shape your own plans of leveraging PM Gati Shakti smarter and better in the future. So let us all, friends, dedicate it the 4th anniversary, and as we enter into the 5th year, to making PM Gati Shakti a tool of national development towards Viksit Bharat 2047. Let us all learn from the lessons of the past. Kindly read this compendium carefully. I think there must be a digital print also, which you can easily download on your phone or your laptop and see at leisure, because every success story will give each one of you ideas for the future, ideas to converge your plans and your vision into reality. I wish all of you the very best in your engagement with PM Gati Shakti. I wish you and your families a very, very happy festive season. We are celebrating Diwali next week. We'll be having Govardhan Puja. We will be having Bhai Dooj. In some parts of the country, a new year being celebrated. We'll have Chhat Puja from 25th to 29th of this month. So it's truly a period of celebration that we are getting into. With these celebrations, as we celebrate the 4th anniversary of PM Gati Shakti, my warmest wishes to each and every one of you, and prayers for a wealthy, very, very healthy, wealthy, safe and secure future for you, your families, and for the 140 crore Indians. Thank you. Thank you, Honorable Minister, for your inspiring words and leadership. Your vision and guidance have been instrumental in shaping the PM Gati Shakti initiative. May I now request the distinguished dignitaries on stage to kindly join for a group photograph. With this, we thank our Honorable Chief Guest for sparing his valuable time. Can we once again thank our Honorable Chief Guest, Shri Piyush Goyal Ji, for sparing his valuable time and gracing this event with his benign presence. Kindly keep the applause going as we thank our esteemed dignitaries.
Honorable Minister of Commerce and Industry, Shri Piyush Goyal, Honorable Minister of State for Commerce and Industry, Shri Jitin Prasad, Honorable Minister for Public Works Department, Shri Rakesh Singh Ji.